गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास टी स्टार्ट करवा आग टिके खाली मत टिके कंफर्म कर दियंतु समस्ते कि जो पीडीएफ टा मु ओपन करिछि सेटा क्लियर अच्छी कि नहीं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑडियो क्लियर अच्छी कि नहीं। आई एम गिविंग 60 सेकंड्स टू यू गाइस कि टिके कंफर्म कर दियंतु कहीं भी जने लाइव चैट रे ऑडियो एंड वीडियो क्लियर अच्छी कि नहीं। ओके देन समस्ते कहउछंती क्लियर अच्छी ऑडियो एंड वीडियो बोथ। सो आमे आगु बढ़िबा। आज क्लास रे हमें कौन डिस्कस करबा आमे जनवरी 2026 रे माने एई वर्ष जहाँ भी ओडिशा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एग्जाम पाई के रेलेवेंट अछि ताकू हमें आउ थरे भल से ए मैगजीन थ्रू रु कवर करबा एंड रिवाइज करबा। ओके ओनली इंपोर्टेंट थिंग हमें रिवाइज करबा किछि अननेसेसरी जिंस हैला ताकू हमें स्किप करबा। बट बिफोर दैट मु एडी किछि बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दउची आपण मानकू एंड ए मैगजीन को आपण कोठी डाउनलोड करिवे आपण ए जो वेबसाइट ता दिया जाईची www.rayacademyias.in ए वेबसाइट रे जाईकी मैगजीन को डाउनलोड करि परिबे एंड एथरो रिवाइज करि परिबे। ओके एंड जो मैगजीन आपण डाउनलोड करिवे सेतरे तीन प्रकार मैगजीन अच्छी जोटा कि दृष्टिकोण में ओडिशा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हमें कवर करूचे। देन आउ गोटे मैगजीन अच्छी द पर्सपेक्टिव करी एठी मु लिखि दउची द पर्सपेक्टिव। ओके एटा होची नेशनल करंट अफेयर्स रो। आउ गोटे अच्छी मासिक सांप्रतिक घटनावली माने ओडिया करंट अफेयर्स एटा ओडिया रे तो ताकू भी जाइकी सेठी पीडीएफ डाउनलोड करि परिबे ए वेबसाइट रे जाइकी राइट। ओके गोटे सेकंड
ओके तो एठी ओपीएससी आउ यूपीएससी पाई कि जो माने प्रिपेयर होतिबे तो सेठी से माने ए नंबर रे जाई कि कोर्स अवेल करि परिबे कस्टम स्टडी प्लान रोची फोकस्ड अटेंशन दिया जाउची देन एक्सपर्ट गाइडेंस मिलिबो रेगुलर फीडबैक मिलिबो तापरे इंग्लिश मीडियम स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल अछि इंग्लिश मीडियम रे एंड ओडिया मीडियम बोथ देन करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी अवेलेबल अछि फॉर आईएएस एंड ओएस एंड आईएएस और ओएस इंटीग्रेटेड कोचिंग फाउंडेशन बैच भी जॉइन करि परिबे एंड टू अवेल मोर इन्फॉर्मेशन ए नंबर रे कांटेक्ट करिवे एंड जो माने यूपीएससी 2026 माने एई वर्ष पई जो माने प्रिपेयर होतिबे तो तांको पई फाउंडेशन बैच ऑलरेडी लॉन्च हेई सारची नंबर दिया जाइची वेबसाइट दिया जाइची कांटेक्ट डिटेल्स दिया जाइची एथिरे जाइकी से माने कांटेक्ट करि परिबे एंड कंटेंट से टिके देखिदबा आज कोन कोन कंटेंट अछि फर्स्ट नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जे कि गोटे नॉर्थ ईस्ट पैनोरामा लॉन्च करछि गोटे हॉर्टिकल्चर विंग लॉन्च करछि ता ऊपर गोटे कंटेंट अछि एनवायरनमेंट रो करंट अफेयर हे गला एटा गोबी फिश फर्स्ट टाइम देखा जाइछि इंडियन वाटर्स रे देन 6th नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल जोटा कि जनवरी 6 रु 8 कंडक्ट हेतिला देन चिलिका भितरकनिका से माइग्रेटरी बर्ड्स आसिकी पहुंची जाइछन्ती द विटनेस्ड अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स टाइगर सेंसस बिगिन हेची घुमसर फॉरेस्ट डिवीजन रे सेकेंड ओडिशा परब जोटा कि गुवाहाटी रे हेतिला जनवरी 30 रु नेकी फेब्रुअरी 1 ता ऊपर गोटे करंट अफेयर्स अछि प्रपोज्ड बैरेज इन छत्तीसगढ़ एंड कंसर्न्स ओवर उडंती रिवर देन गोटे एमओयू साइन हेची ए दिटांक मझिरे एसएससी पीडी और एनआई पीआईडी भितरे टू स्ट्रेंथन द सपोर्ट फॉर पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज नॉट ओनली विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कोन सेटा भी हम देखिबा तार डेफिनेशन कोन व्यास कवि फकीर मोहन ओडिया भाषा सम्मान आर्टिफिशियल नेस्ट इंस्टॉल हेची स्पारो कंजर्वेशन पाई गंजाम रे देन गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्कीम लॉन्च हेची ओडिशा फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेजेस अंडर पीएम सूर्य घर योजना डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर बैम्बू प्रोडक्ट लॉन्च हेची ओडिशा रे देन फेक ई चालान को केमिति आपण जानिबे कि एटा फेक बोली कि एंड हाउ टू स्टे सेफ ता ऊपर गोटे न्यूज़ अछि वेरी इंपोर्टेंट फॉर मेंस स्पेसिफिकली किंतु किछि डेटा एमिति अछि जोटा कि प्रीलिम्स पई भी इंपोर्टेंट मो स्टार मार्क कर देबी जो गुडा का इंपोर्टेंट वी विल स्टडी इन आवर लैंग्वेज एटा गोटे इनिशिएटिव टा ओडिसा रे लॉन्च हेची आईआईटी भुवनेश्वर से गोटे सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करछि फॉर बॉक्साइट एक्सप्लोरेशन नो सस्पेक्टेड निपा वायरस एठी केतरा रिपोर्ट हैला केस सेटा इंपोर्टेंट नुहे बट व्हाट इज निपा वायरस सेटा केमिति स्प्रेड हुए केमिति कहा थ्रू रु आसे बैट्स माने केमिति एतरे इन्वॉल्वड पिग्स माने केमिति इन्वॉल्वड ह्यूमन माने केमिति इन्वॉल्वड एटा बहुत इंपोर्टेंट देन गौर पॉपुलेशन रे राइज देखिबा को मिलिछि देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे महानदी वाटर डिस्प्यूट ऊपर न्यूज़ अछि देन ओडिशा फर्स्ट ट्रैक मेजर रोड प्रोजेक्ट to boost connectivity annual dolphin census start heitila चिलिका लेक ओडिसा रे then ओडिशा मेघालय pact गोटे हेतिला टू स्ट्रेंथन द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट ओडिशा एग्रीकल्चर ड्रॉट मिटिगेशन प्रोग्राम ओएडीएमपी लॉन्च हेची कंक्रेज बुल ऊपर गोटे क्वेश्चन अछि आई मीन गोटे न्यूज़ अछि content then Padma Awards 2026 Odisha's contribution to Indian art culture and education Odisha's पट्टचित्र जोटा कि ग्लोबल स्टेज रे शोकेस हेची at IICDEM 2026 ओडिशा रो डिस्कॉम से नेशनल पावर रैंकिंग रे लीड करूचंदी नेक्स्ट सीएम हमर इंडिया रो फर्स्ट एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट को इनॉग्रेट करचंदी व्हाइट स्केलेटन म्यूजियम ओडिशा रो कोस्टल रीजन रे हबा गु जाउची ता ऊपर डिमांड लोकल्स माने केमिति रेज करचंदी ता ऊपर गोटे न्यूज़ अछि देन ब्लैक बक सेंसस आमे पढिबा देन ओडिशा एग्रीकल्चर ड्रॉट मिटिगेशन प्रोग्राम लॉन्च करची ता ऊपर पढिबा फैक्ट्स एंड फिगर्स आमे किछटा देखिबा डाटा रिकैप करिबा एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ ऊपर देन एग्रीकल्चर क्लाइमेट एंड रूरल डेवलपमेंट ऊपर कोन कोन सब एबे सब डाटा अछि फैक्ट्स अछि फिगर अछि जोटा कि आपण माने देई परिबे मेंस आंसर राइटिंग रे इंट्रोडक्शन रे and prelims may be both important energy infrastructure industry education language social sector culture art heritage science technology health governance
साइबर अवेयरनेस तापरे किछिटा क्वेश्चन अछि जो क्वेश्चन को निजे निजे घरे प्रैक्टिस करि परिबे एंड निजे को टेस्ट करि परिबे फर्स्ट है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से नॉर्थ ईस्ट पैनोरामा और हॉर्टिकल्चर विंग टा लॉन्च हेजी केबे 66th फाउंडेशन डे रे तार लॉन्च हेजी जोटा कि ओडिसा रो आउ इंडिया रो गोटे कंजर्वेशन सेंट्रिक सस्टेनेबल और एजुकेशन ओरिएंटेड जू मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करछि। एबे नॉर्थ ईस्ट पैनोरामा कहले कोन नॉर्थ ईस्ट पैनोरामा होछि गोटे थीमेटिक जू जोन ओके जोटी कि इकोलॉजिकल और फॉनल डाइवर्सिटी को सेठी रिप्रेजेंट करा जाए। एटा 5.17 एकर्स रे एटा डेवलप हेची हैबिटेट इमर्सिव नेचुरलिस्टिक डिजाइन प्रिंसिपल्स उपरे 10टा मॉडर्न एनक्लोजर्स अछि सेतरे देन एक्सटेंडेड विजिटर पाथवेज भी सेतरे प्रोवाइड होची इक्विप्ड विथ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जेमति कि फीडिंग सेल्स हला ब्लैक क्राल्स हला बैक क्राल्स हला देन सर्विस रोड्स हला वाटर और एनिमल केयर फैसिलिटीज एगुडी को सब भी अछि एंड को स्पीसीज एथे रिप्रेजेंट हेबे प्राइमेट्स हेबे जेमति गिबन हेले मैकाक हेले जते टाइप रो मैकाक्स अछंती गिबन्स अछंती देन मैमल्स रे हिमालयन ब्लैक बियर हॉग डियर मणिपुरी डियर बर्ड्स रे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हिमालयन ग्रिफन रेप्टाइल्स रे एशियन ब्राउन टॉर्टोइज स्पेशलाइज्ड एनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर एथरे हेची जेमति कि सीवेट एनक्लोजर एवेन्यू स्मॉल कैट कॉम्प्लेक्स क्वारंटाइन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होची हर्बिवोर क्वारंटाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड होची कोन पई क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड होची जति क्वारंटाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड न हबो जो मानको डिजीज हेची ताहले डिजीज ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हबो ओके सो टू प्रिवेंट दिस डिजीज ट्रांसमिशन एंड एड देयर रिहैबिलिटेशन क्वारंटाइन सपोर्ट प्रोवाइड होची रेप्टाइल क्वारंटाइन सपोर्ट भी सिमिलरली प्रोवाइड हेची हॉर्टिकल्चर विंग हमें देखियो गले सेटा 1.6 एकर्स लैंड ऊपर से डेवलप हेची बना हेची सेल्फ सफिशिएंट सेटा प्लांट रे ग्रीन रिसोर्स मैनेजमेंट हिसाब रे डिजाइन हेची इट इंक्लूड्स द पॉली हाउसेस नर्सरीज वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट्स क्लाइमेट और वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स एतरे इंक्लूड अछि सपोर्ट landscaping and green cover enclosure enrichment of animals reduction in operational cost and external dependency and जो it strengthens the transformation of zoos into centers of conservation education and research एथिरे कोन होची एथिरे पब्लिक अवेयरनेस आउरी एनहांस होची एनिमल वेलफेयर एथिरे इंप्रूव होची सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस को प्रमोट करा जाउची थ्रू वेस्ट रिसाइक्लिंग इन हाउस रिसोर्स जनरेशन एटसेट्रा एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी रो जो गाइडलाइंस अछि ता सहित भी ए स्टेप टा अलाइन करूची एम्फसाइजिंग कंजर्वेशन ब्रीडिंग एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी चैलेंजेस कोन रहिची कि बहुत फर्स्ट इनिशियली बहुत पैसा खर्च हम इतरे हाई फाइनेंशियल कॉस्ट इतरे इंक्लूड अछि टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी अछि हैबिटेट बेस्ड एनक्लोजर्स पाई कि ताको मेंटेन करिया पाई कि कंटीन्यूअस साइंटिफिक मॉनिटरिंग एथि पाई कि दरकार देन स्किल्ड ए सब जिंस को हैंडल करिया पाई स्किल्ड मैन पावर दरकार तो सेति पाई कि ताकर कैपेसिटी बिल्डिंग हवा दरकार प्रॉपर ट्रेनिंग हवा दरकार इन वाइल्ड लाइफ केयर वेटरनरी साइंस हॉर्टिकल्चर देन विजिटर प्रेशर को मैनेज भी करा जिबा दरकार विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स ओके सो तो हमको करा कोन जिबा दरकार कि कंजर्वेशन ब्रीडिंग आ जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम रहला ताको आउरी स्ट्रेंथन करा जिबा दरकार एंड जो मैन पावर को स्किल करिबा पई तांकर फर्दर स्किल डेवलपमेंट पई कि तांकर कैपेसिटी बिल्डिंग हवा दरकार तांकर रेगुलरली ट्रेनिंग हवा दरकार रिसर्च और एकेडमिक कोलैबोरेशन को प्रमोट करा जिबा दरकार इन वाइल्ड लाइफ स्टडीज एनवायरमेंटल एजुकेशन सिटीजन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स ओके एगुडी को सब प्रमोट करा जिबा दरकार एठी किछि फैक्ट अछि कि नंदनकानन होची फर्स्ट जू इन द वर्ल्ड these facts are जो टेबल फॉर्म रे जो फैक्ट्स अछि ना जोडा दिया जाई छि मैगजीन में इंक्लूड होई छि सेगुडी को सब स्टार मार्क करी रखिबे प्रीलिम्स पई बहुत इंपोर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स एसो फैक्ट गुडा जा प्रोवाइड होई छि फिर व्हाइट टाइगर वाज बोर्न इन कैप्टिविटी इन 1960 वेरी इंपोर्टेंट जदि नंदनकानन ऊपर ए रिलेटेड न्यूज ऊपर जदि किछि पचला दी तीनटा स्टेटमेंट रो एम्ति किछि नंदनकानन रो बैकग्राउंड ऊपर भी सेटा स्टेटमेंटा फॉर्म हेई पारे सो इट पायोनियर्ड मोटेड केज फ्री एनक्लोजर्स इन इंडिया Okay, Northeast India showcased in the panorama contain 2 global biodiversity hotspots. Greater adjuvant stock जो हैला एठी सेटा अछि जोटा कि among the rarest large bird globally. Plants ए जो zoo horticulture रे grow होचंदी they are used for behavioral enrichment, improving animal health and reducing stress. Next हमें देखिबा गोबी फिश
ऊपर न्यूज अच्छी फर्स्ट टाइम एटा देखिया को मिली गोबी फिश इंडियन वाटर्स रे तार फैमिली होची गोबीडे ओके रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन वाटर्स एंड एटा गोटे इंडिया माराइन बायोडाइवर्सिटी रेकर्ड रे याकू फर्स्ट टाइम इंक्लूड करा जायछि कारण एटा फर्स्ट टाइम देखिया जो मिलछि गोबी फिश फैमिली गोबीडे एटा होछि लार्जेस्ट फिश फैमिली इन द वर्ल्ड एटा मन रखिबे वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स occurs in marine brackish and freshwater ecosystem जदि एमती क्वेश्चन देला कि ओनली marine ओनली brackish ओनली freshwater ताहले हबनी marine रे भी देखा जिवो ये freshwater भी देखा जाय एंड फ्रेश brackish water रे भी देखा जाय आंकर साइज कहया को गले ए माने होचंदी छोटो साइज रो स्मॉल साइज्ड बॉटम ड्वेलिंग benthic fishes known for high habitat specificity तांकर बायोलॉजिकल फीचर होची तांकर जो pelvic fins जो रहिला सेटा fused into a suction disc okay helping them to cling to rock or substrates sandy muddy reef mangrove deep sea habitats रे माने आराम से अडैप्ट करि जानती camouflage आंकर ए माने शो करंती क्रिप्टिक बिहेवियर शो करंती symbiotic associations भी करंती माने कहा सहित श्रिम्प सहित एंड अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स मानक सहित सिग्निफिकेंस होची एंकर जो मरीन बायोडाइवर्सिटी नॉलेज हमर जो रहिला सेटा एक्सपांड कला काइना जेहेतु गोटे नुवा स्पीशीज डिस्कवर हैला ता ऊपर एबे स्टडी हबो रिसर्च हबो सो मरीन बायोडाइवर्सिटी नॉलेज रे एक्सपेंशन होची सेकेंड इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस रो अछि काइना ए माने गोटे की रोल प्ले करंदी फूड वेव्स न्यूट्रिएंट साइकिल सेडिमेंट हेल्थ रे साइंटिफिक वैल्यू आंकर टैक्सोनॉमिक और बायोजियोग्राफिक रिसर्च एतरे स्ट्रेंथन होची कंजर्वेशन रेलेवेंस रे ए माने highlight the need to protect the less explored eta ebe dekha gala so there is a need to protect the less explored and fragile marine habitats broader implications कोन कि जो इंडियन मराइन इकोसिस्टम रहिला सेटा अंडर एक्सप्लोर एबे भी अछि ओके जेमति कि ऑफशोर और डीप सी जोन्स हैला एटा सपोर्ट करूची द इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड मराइन कंजर्वेशन एंड ब्लू इकोनॉमिक गोल्स helps in designing marine protected areas challenges रही कि एटा एक्चुअली डीप सी जके लिमिटेड और ऑफशोर बायोलॉजिकल सर्वेस जके लिमिटेड डिफिकल्टी एबे भी रही ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड क्रिप्टिक मॉर्फोलॉजी ओवरफिशिंग रो थ्रेट अछि कोस्टल पोल्यूशन हैबिटेट डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज ए सब एबे भी थ्रेट परसिस्ट करूची सो वे फॉरवर्ड हमर कोन हबा दरकार कि सिस्टमैटिक मरीन बायोडाइवर्सिटी सर्वे हबा दरकार मराइन कंजर्वेशन प्लानिंग एंड इंपैक्ट असेसमेंट एगुडा सब प्रॉपर्ली हबा दरकार देन कोस्टल और ऑफशोर इकोसिस्टम रो मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग को प्रमोट करा जिबा दरकार एंड सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस प्रति इंडिया रो जो कमिटमेंट अछि ताकू रीइनफोर्स करा जिबा दरकार एटी गोटे आ गोटे टेबुलर फॉर्म रे इंफॉर्मेशन दिया जाय कि गोबीज कॉन्स्टिट्यूट ओवर 2000 स्पीशीज ग्लोबली ओके किछि गोबी स्पीशीज एमती अछन जो माने कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट रे से माने सर्वाइव करि जिबे एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट इन द सेंस लो ऑक्सीजन एंड डीप सी हैबिटेट्स कौन पे ना आंकर जो छोटो साइज थाए स्मॉल साइज एंड से माने कैमोफ्लेज भी करि परिबे गोबीज आर ऑफन डिस्कवर्ड लेट डिस्पाइट बीइंग अबंडेंट सेमानकर नंबर अबंडेंट थिले मध्य जेहेतु से माने कैमोफ्लेज करि जाउछन ताका हैबिटेट सहित सेमान को लेट डिस्कवर करा जाए न्यू मरीन स्पीशीज डिस्कवरीज ऑफन इंडिकेट हेल्दी बट अंडर स्टडीड इकोसिस्टम बुझेला देन 6th National Chilika Bird Festival to be held from January 6 to 8 6th National Chilika Bird Festival एटा शेड्यूल हेतिला January 6 to 8 जोटा कि ऑलरेडी कंडक्ट हे सरची ओडिसा रे बर्ड कंजर्वेशन इको टूरिज्म और पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करिवा पई अराउंड द चिलिका लेक जोटा कि एशिया रो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून फेस्टिवल होची एटा एनुअली एटा कंडक्ट करा जाय नेशनल लेवल इवेंट एटा गोटे एंड ओडिसा गवर्नमेंट एटा को ऑर्गेनाइज करे एंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अथॉरिटीज ए माने ऑर्गेनाइज करंती एंड एटा ए टाइम रे ऑर्गेनाइज हुए जो टाइम टा होची पीक माइग्रेटरी बर्ड सीजन ओके सो की एक्टिविटीज एटी कोन कोन इंक्लूड की एक्टिविटीज रे बर्ड वाचिंग सेशंस अच्छी नेचर ट्रेल्स बोट सफारी फोटोग्राफी बर्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम अवेयरनेस कैंपेन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इवेंट ए सब एटी कंडक्ट हुए नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस होची वेटलैंड कंजर्वेशन जेमति कि चिलिका होची गोटे रामसर साइट आ गोटे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एवियन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन काइना चिलिका ओवर 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट करे इको टूरिज्म प्रमोट होची सस्टेनेबल इको टूरिज्म पब्लिक अवेयरनेस भी एठी प्रमोट होची जेमति कि बर्ड कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट सेंसिटिविटी ऑफ वेटलैंड्स रे रिसर्च एंड मॉनिटरिंग भी एठी सपोर्ट करा जाउची for bird sensors species documentation long term ecological studies चिलिका important एथि पई कि काइना चिलिका होची एशिया रो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून एंड एटा गोटे रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस
and एटा गोटे critical wintering ground also. What are the challenges? Persist ki unregulated tourism, boating, climate change, siltation, invasive species हेले, livelihood needs, जो सेठिकार जो लोकल कम्युनिटीज माने अछन तांको जो लाइवलीहुड नीड्स हला और जो कंजर्वेशन गोल्स चलीची साइमल्टेनियसली ताको बैलेंस करबा एबे भी गोटे चैलेंज. सो इको टूरिज्म गाइडलाइंस को रेस्पॉन्सिबली ताको स्ट्रेंथन करा जिबा दरकार. कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एंड बर्ड मॉनिटरिंग को एनहांस करा जिबा दरकार. वेटलैंड एजुकेशन, क्लाइमेट अवेयरनेस ए सब फेस्टिवल्स को गोटे प्लेटफॉर्म हिसाब रे यूज करके वेटलैंड एजुकेशन और क्लाइमेट अवेयरनेस को प्रमोट करा जिबा दरकार. लॉन्ग टर्म वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान्स जो रहिला ताको बर्ड फेस्टिवल सहित इंटीग्रेट करा जिबा दरकार. देन चिलिका लेक होची फर्स्ट वेटलैंड इन इंडिया जोटा कि रामसर साइट के बे हेतिला 1981 रे हेतिला. एटा वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. एटा कंटिन्यूअसली आसे भी. सो द लेक सपोर्ट्स मोर देन 200 बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोज एंड रेयर रैप्टर्स. जो माइग्रेटरी बर्ड्स रहिले से माने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स से माने माइग्रेट करके आस्थान जेटा समस्त जानथिबे. देन हेल्दी बर्ड पॉपुलेशन एक्ट एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम हेल्थ. चिलिका भितरकनिका से माने भी विटनेस करछन्ती माइग्रेटरी बर्ड्स, सीजनल अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, फेवरल काहेंगिना से माने आसंती कोन पई काहेंगिना तांगु सेठी फेवरेबल वेटलैंड कंडीशन मिले. माइग्रेटरी अराइवल रे किछि इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अछि. बर्ड से माने कोन करंदी ओडिसा को माइग्रेट करके आसंती कोठू सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप. एंड ए जो वेटलैंड्स गुडा रहिला से माने कोन प्रोवाइड करंदी माइग्रेट करके जो माने से आसुचंती तांको से किछि गोटे फेवरेबल जिंस पाउथिबे बोली. सो दे प्रोवाइड विंटरिंग, फीडिंग एंड रेस्टिंग ग्राउंड्स. स्पीशीज जेमति कि डक्स, गीज एले किछटा स्पीशीज अछि. जस्ट गो थ्रू इट. एंड व्हाई चिलिका इज इंपोर्टेंट as a major bird habitat. एटा होछि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून कहली रामसर साइट एटा. देन फ्रेश वाटर मरीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को सपोर्ट करे. फिश, प्लैंकटन एंड एक्वाटिक वेजिटेशन जोड़ा कि बर्ड्स माने आसी तांको ऊपर फीड करिवे. सो तांको पई अबंडेंट फूड भी अछि सेठी. भितरकनिका इंपोर्टेंट कोन पई एटा होछि इंडिया र लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम. एटा गोटे नेशनल पार्क और साथ ही साथ गोटे रामसर साइट भी. सेफ रूस्टिंग एंड फीडिंग जोन ये प्रोवाइड करूछि माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स मानक पई. मैंग्रोव बफर क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एंड सपोर्ट हाई बायोडायवर्सिटी. इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कौन? इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होची इकोसिस्टम हेल्थ रो एटा होची इंडिकेटर कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स जते बळे माइग्रेट करके आसंती दे आल्सो शोज कि वाटर क्वालिटी, फूड अवेलेबिलिटी एंड हैबिटेट स्टेबिलिटी सेटी प्रॉपर अछि. सो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को एटा भी शो करूची. वेटलैंड फंक्शनैलिटी जेमि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सीड डिस्पर्सल को एड करूची. क्लाइमेट रेलेवेंस, माइग्रेशन पैटर्न्स हेल्प साइंटिस्ट टू ट्रैक द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स ऑन द वेटलैंड्स. सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जेमति कि इको टूरिज्म को बूस्ट करूची. नेचर बेस्ड लाइवलीहुड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रिसर्च, एजुकेशनल इनिशिएटिव ए सब को बूस्ट करूची. चैलेंजेस बा कंसर्न कोन अछि कि अनरेगुलेटेड टूरिज्म एंड बोटिंग, पॉल्यूशन, सिल्टेशन, इन्वेसिव स्पीसीज एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी still a challenge. Human wildlife conflict also. So way forward कौन हबा दरकार? Way forward की जो wetland protection और habitat management अछि ताको properly strengthen करा जाऊ. इको टूरिज्म एंड बोटिंग practices को regulate करा जाऊ. साइंटिफिक मॉनिटरिंग को एनहांस करा जाऊ. देन माइग्रेशन ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन ट्रेंड्स एंड बर्ड पॉपुलेशंस. लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्लानिंग जो रहिछि लोकल कम्युनिटीज मानको सेतरे इंक्लूड करा जाऊ. चिलिका they host 1 million migratory birds during the peak winter months. भितरकनिकार mangrove they act as natural carbon sink. जे कोनोसी mangrove they act as natural carbon sink. Migratory birds से thousands of kilometers migrate करके आस्थांती. They used as early indicators of climate change. टाइगर सेंसस जोड़ा स्टार्ट हेतला घुमुसर फॉरेस्ट डिवीजन रे सेटा सरीची. टाइगर सेंसस घुमुसर फॉरेस्ट डिवीजन रे स्टार्ट हेतला. कमेंस्ड. एक्सरसाइज एम टू टाइगर प्रेजेंस, पॉपुलेशन ट्रेंड एंड हैबिटेट कंडीशन. केते टाइगर रहिले, केते पॉपुलेशन रहिले, पॉपुलेशन बढ़िला, कमिला कि स्टैग्नेंट अछि, तांकर हैबिटेट रो कंडीशन कोन माने जो एनवायरनमेंट रे रहउछन्ती ता कंडीशन कोन. घुमुसर फॉरेस्ट डिवीजन होची साउदर्न ओडिसा रे, सदर्न ओडिसा रे लोकेटेड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप रो गोटे पार्ट. कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड मॉइस्ट deciduous forest. गोटे पोटेंशियल कॉरिडोर हिसाब रे से एक्ट करे एंड एक्सटेंडेड हैबिटेट फॉर बिग कैट्स जेमति कि फॉर एग्जांपल टाइगर्स हला. टाइगर सेंसस सेटा इंडिया रो गोटे पीरियोडिक वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क.
एटा साइंटिफिक और नॉन इन्वेजिव मेथड को यूज करे जेमती कैमरा ट्रैप्स हला पग मार्क एंड स्कैट एनालिसिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट साइटिंग रिकॉर्ड्स ए सब को यूज करा जाए टाइगर सेंसस रे फोकसेस ऑन बोथ टाइगर नंबर्स एंड हैबिटेट क्वालिटी केवल से माने एटा देखंतनी कि टाइगर को पॉपुलेशन सेटा बढ़िला कि कमिला बट से माने को एनवायरनमेंट रे रहउचंदी तांकर हैबिटेट रो हेल्थ कोन सेटा को भी नोटिस करा जाए सिग्निफिकेंस कोन कंजर्वेशन प्लानिंग help identify the area suitable for tiger conservation and habitat restoration biodiversity protection भी एतरे होची टाइगर माने होचंदी अम्ब्रेला स्पीसीज सो तांको कंजर्व करिया माने होची एंटायर फॉरेस्ट सिस्टम को कंजर्व करिवा लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट जो it provides insights into connectivity between forest divisions and movement patterns human wildlife conflict migration एटा गोटे better planning प्रोवाइड करूची टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्रिंज विलेजेस माने टाइगर्स माने जोठी रहउचंती धर एटा तांकर हैबिटेट हैला ए फ्रिंजेस रे जो विलेजेस माने अछंती सो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन रे भी एटा हेल्प करूची इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ टाइगर्स इकोलॉजिकल they maintain the ecological balance forest health how prey base availability better अच्छी कि नहीं सेटा ताको इंडिकेट करे presence reflects intact and functioning ecosystems now what are the challenges कि habitat fragmentation होची काहे human settlement और infrastructure बढ़ुची illegal activities resource extraction होची trained manpower एते नाहंती सब टैकल करिया पई long term monitoring भी गोटे problem so tigers माने लिस्ट हेचंदी एज एंडेंजर्ड सब बळे मने रखिथिबे तांकर स्टेटस कोन आईयूसीएन रेड लिस्ट हैला बा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हिसाब रे जो स्पीसीज माने न्यूज रे रहउचंदी तांकर स्टेटस कोन बिकॉज़ ए जो फैक्ट गुडा रहिला दे आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स सो एटी मने रखिबे कि टाइगर होची एंडेंजर्ड इंडिया 70% टाइगर पॉपुलेशन रो होम वर्ल्ड्स wild tiger population monitoring tigers outside reserves is crucial for identifying future conservation landscapes and healthy tiger population they indicate prey diversity strong achi and forest integrity be strong achi okay second odisha parab in guwahati जोटा कि held ऑर्गेनाइज हेतला जनवरी 30 रो नेकी फेब्रुआरी 1 जाके गुवाहाटी रे एटा हेतिला and तार प्रमोट थिला कि ओडिसा रा कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म पोटेंशियल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एंड क्यूजिन को सेटी प्रमोट करबा वेयर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ओडिसा परब होची गोटे कल्चरल आउटरीच इनिशिएटिव ओडिसा गवर्नमेंट रो जोटा कि डिजाइन करा जाईची ओडिसा रा आर्ट ट्रेडिशन लैंग्वेज इकोनॉमिक प्रोडक्ट को स्टेट रो बाहर भी केमिति शोकेस करा जिबा पई सो इट इज अ टूल फॉर डोमेस्टिक कल्चरल डिप्लोमेसी second edition reflect the continuity and success of the first Odisha Parab मन रखिबे एटा second edition थिला आगरो आ गोटे first edition already conduct हेची so 3 दिन पई एटा conduct हेतिला एठी मिशन शक्ति ओडिसा टूरिज्म इमान सब पार्टिसिपेट करथले जस्ट गो थ्रू इट कि कोमन सब पार्टिसिपेट करथले स्पेशल अट्रैक्शन कोन थिला सिग्निफिकेंस ये कि कल्चर प्रमोट होची इंटेंजिबल ओडिसा रो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इतरे ताको विजिबिलिटी मिलला इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो आर्टिसन वीवर बा वुमेन एसएचजी रहिले सेमानकर मार्केट एक्सपैंड हैला तो टूरिज्म डेवलपमेंट इंटरस्टेट टूरिज्म कोटा encourage कराए diaspora engagement strengthens the bond with the Odia diaspora residing in Assam and the northeast federal integration interstate cultural cooperation को promote करा जाउची एथरे now what are the challenges की जो short duration बा 3 दिन पई एटा होची तो एटा long term market impact केते दूर जाई पकेइबो एटा ताको लिमिट करूची सो हाई लॉजिस्टिकल और कोऑर्डिनेशन डिमांड रहीची सिंबॉलिक विदाउट सस्टेन्ड फॉलो अप जदि आको मेंटेन न करा जीवो आकु रेगुलरली न करा जीवो देन risk of events remaining a symbolic without sustained follow up limited digital outreach beyond the physical visitors okay proposed barrage in Chhattisgarh and concerns over Udanti river छत्तीसगढ़ जो बैरेज टा प्रपोज करिछि से कंस्ट्रक्ट करियो बोली तो ओडिसा रे सेथि पई कि कंसर्न्स अराइज हेछि एंड बैरेज टा कोडी छत्तीसगढ़ करिवो कोछि उडंती रिवर ऊपर करिवो कोछि जोटा कि पॉसिबल डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट पकेबो ऑन उडंती रिवर सो ओडिसा हैज रेज्ड इट्स कंसर्न्स ओडिसा एप्रीहेंड्स दैट जो अपस्ट्रीम कंस्ट्रक्शन हैला जोटा छत्तीसगढ़ करिवो को बाहरछि सेटा वाटर फ्लो को रिड्यूस करिवो कोठी ओडिसा रे जोटा कि डाउनस्ट्रीम स्टेट
उड़ंती रिवर होची एटा कोठी ओरिजिनेट हेई थाए दंडकारण्य फॉरेस्ट रीजन रो ओरिजिनेट हेची देन नुआपड़ा और कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट देकी सेटा फ्लो करे देन फ्लो करी कि जाई कि सेटा जॉइन करे तेल रिवर को जोटा कि महानदी रिवर सिस्टम रो गोटे ट्रिब्यूटरी and जो surrounding landscapes रहिला they form part of the Udanti Sitandi Tiger Reserve declared in 2003 making the river ecologically sensitive. Concerns कौन रही जो proposed barrage रो जोटा कि छत्तीसगढ़ propose करी कि downstream flow को से reduce करिवो. So जो agriculture रहिला कि land रहिला से गुडी का dry ही जीवो they will face drying and low flow conditions. Irrigation project ऊपर impact पकेइबो upper and lower Udanti irrigation project ऊपर impact पकेइबो then drinking water availability ऊपर भी impact पकेइबो livelihood risk भी associated अछि ecological consequences जेंति aquatic biodiversity riverine forest ecosystem एगुडी सब disturb होई परंती governance and federal concern होछि एटा गोटे interstate river system उड़ंती it is a part of interstate river system so regular coordination state मानक भितरे रहिबा दरकार and unilateral upstream intervention माने छत्तीसगढ़ एकाकी ही कहूछि कि से बैरेज सेटी कंस्ट्रक्ट करिवो सो इट इज एन यूनिलैटरल डिसीजन एथरे किछि दीटा जाक स्टेट मिसी कि सेमति किछि थ्रू अ डायलॉग in नतीजरे से पहुंची नांदी so it is unilateral upstream intervention it will raise concern regarding the upstream downstream impact principle absence of prior consultation with the downstream state weakens the spirit of cooperative federalism and ये जो issue टा रही it has gained sensitivity due to its linkage with the Mahanadi river basin जोटा कि गोटे एबे भी गोटे अनरिजॉल्व्ड इंटरस्टेट इशू चैलेंजेस होची कि वीक इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन रे डिले रही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स को ह्यूमन वाटर नीड्स सहित बैलेंस करि पारे भी प्रॉब्लम रहउची देन वाटर स्ट्रेस increase होची ड्यू टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड एराटिक रेनफॉल सो साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट इंपैक्ट असेसमेंट हबा दरकार प्रायर कंसल्टेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग हबा दरकार दीटा स्टेट भितरे बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड रिवर मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करा जिबा दरकार एनवायरमेंटल फ्लो नॉर्म्स को मेंटेन करा जिबा दरकार टू प्रोटेक्ट द river health and dependent livelihoods. SSCPD और NIPID भितरे memorandum of understanding sign हेची to strengthen what? To strengthen and support persons with intellectual disabilities. कॉन्टेक्स्ट होची कि जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज रहिला सी गोटे MOU माने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करछि विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड ए एग्रीमेंट सिक करछि कि केमती अर्ली से माने तांको आइडेंटिफाई करिवे स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन तांको प्रोवाइड हबो कैपेसिटी बिल्डिंग सहित कम्युनिटी अवेयरनेस भी प्रोवाइड हबो को मानको जो मानकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रहिछि अक्रॉस ओडिसा नाउ who are persons with intellectual disabilities से माने होछन सेही पर्सन जो मानकर significant limitation रही in intellectual functioning and adaptive behavior जेमति कि learning हला communication और independent living हला so they require specialized education approaches and early intervention and continuous social support एटा गोटे right based approach India follow करूछि to disability welfare guided by the rights of person with disabilities act 2016 and ए जो MOU टा साइन हेची एटा गोटे नेचर ऑफ कोलैबोरेशन एटा गोटे स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट गोटे नेशनल लेवल भीतर गोटे पार्टनरशिप ड्यूरेशन तार 3 इयर्स रही टारगेट ग्रुप होचंदी चिल्ड्रन देन स्पेशल एजुकेटर्स टीचर्स केयर गिवर पेरेंट्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स and got a joint coordination committee be form haba to see the planning implementation and monitoring components hochi got a curriculum implementation adoption of NIPID developed standardized curricula and grant in aid special schools under SSEPD capacity building haba training program conduct haba early identification haba jo manakar intellectual disability rahichi then interventions proper carry out haba digital and learning resources provide haba jemti digital content technical aids and resource materials research and documentation haba joint research initiatives documentation of best practices preparation of policy inputs community awareness conduct haba significance hochi quality uplift in special education uniform standard ensure hochi and evidence based pedagogy ethi ensure hochi long term developmental impact jemti learning outcome social integration and independence upare pakai pare human resource development ethi hochi trained professional workforce ethi gote create hochi in the disability sector inclusive governance right based and dignity centric model को follow करा जाउची of disability support
Policy strengthening, research driven inputs support better planning, budgeting and program design. Challenges रही जेमती कि uneven implementation एबे भी रही across districts. को डिस्ट्रिक्ट रे कम हेले को डिस्ट्रिक्ट रे बेसी. शॉर्टेज रही रिटेंशन ऑफ ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर्स. डिजिटल एक्सेस गैप्स एबे भी अच्छी. देन सस्टेन फंडिंग आउ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी दरकार कंटिन्यूअसली. कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी हवा दरकार. वे फॉरवर्ड रे आमे एटा देखि परिबा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूशन आउ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करा जाऊ. हाइब्रिड ट्रेनिंग मॉडल्स को एक्सपांड करा जाऊ. हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम ए सब को इंटीग्रेट करा जाऊ विद द डिसेबिलिटी सर्विसेज. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करा जाऊ. व्यासकवि फकीर मोहन ओडिया भाषा सम्मान. व्यासकवि फकीर मोहन ओडिया भाषा सम्मान एटा कन्फर करा जायछि अपॉन एमिनेंट ओडिया स्कॉलर नृसिंह चरण सरंगी आंको ऊपर आंको दिया जायछि फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर. एंड ए अवार्ड टा इंस्टीट्यूट करथिले बाय करा जायछि बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. एटा गोटे प्रेस्टिजियस स्टेट लेवल लिटरेरी ऑनर अवार्ड गोटे. एंड फकीर मोहन सेनापति को ना ऊपर ए अवार्ड टा रखा जायछि जे कि मॉडर्न ओडिया लिटरेचर रो फाउंडर. एम टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल एंड सस्टेन contribution in Odia language, literature and literary research and criticism. Cash prize 5 लाख मिलुची. फॉर्मल स्टेट रिकॉग्निशन मिलुची. देन पब्लिक ऑनर मिलुची. गोटे स्टेट लेवल सेरेमनी एटी कंडक्ट होची ऑर्गेनाइज करा जाउची बाय द ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा. फकीर मोहन सेनापति किए थिले? फकीर मोहन सेनापति से मॉडर्न ओडिया प्रोज एंड फिक्शन रे गोटे पायोनियर थिले. रियलिस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ रूरल सोसाइटी पाई से जाना जानती. अंडर कॉलोनियल रूल यूज्ड लिटरेचर एज ए टूल फॉर सोशल रिफॉर्म एंड क्रिटिक. एंड तांकर आइकॉनिक नोवेल जोटा कि 6 माणा 8 गुंट सेटा होची इंडिया रा अर्लीएस्ट रियलिस्ट नोवेल. लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एठी होची. दिस इज वन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस. जेमति कि ओडिया लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को इंपोर्टेंस दिया जाउची. लिटरेरी एनकरेजमेंट एठी मिलुची स्कॉलर राइटर रिसर्चर्स मन को. कल्चरल कंटिन्यूटी लिंक्स द कंटेम्पररी स्कॉलरशिप विद द ओडिसास रिच लिटरेरी हेरिटेज. एकेडमिक वैल्यू एठी प्रमोट होची. कंपैरेटिव लिटरेचर criticism, original research, it is to encourage hochi. State support to culture, protecting and promoting regional languages. Cultural relevance ethre broaden hochi. Odisha gote classical language of India requiring sustained academic and cultural nurturing. So एमिति सब award दिया गले जो language marginalization है जाउची, decline है जाउची, literary engagement और over commercialization है जाउची सबको counter करा जाई परिबो. So what are the challenges कि limited readership अछंती. समस्त लिटरेरी और क्रिटिकल वर्क्स को पढ़ु नांदी से माने तमु सीरियसली नो नांदी. सो देयर इज नीड फॉर ग्रेटर इंटीग्रेशन. यंग स्कॉलर्स माने जो माने अछंती एटा इंश्योर करा जिबा दरकार कि से माने एंगेज हेबे विथ लिटरेचर विथ क्लासिकल एंड मॉडर्न ओडिया टेक्स्ट आल्सो. आर्टिफिशियल नेस्ट इंस्टॉल करा जायछि फॉर स्पैरो कंजर्वेशन इन गंजाम. आर्टिफिशियल नेस्ट एटी देखि पारुथिबे तांको पई कि एटा से माने नेचुरली बनै नांदी कुटा काठी नै कि आर्टिफिशियली एटा तांको पई कि इंस्टॉल करा जायछि. को मानको पई एटी स्पैरोज मानको पई इंस्टॉल करा जायछि. नेशनल बर्ड डे जनवरी 5th रे इनिशिएटिव टा निया जायछि. हाउस स्पैरो तांकर साइंटिफिक नेम होजे पैसर डोमेस्टिकस. ये गोटे कॉमन बर्ड एबे कॉमन बर्ड थिले वाज वंस अ कॉमन बर्ड इन ह्यूमन सेटलमेंट. तांकर पॉपुलेशन एबे बहुत डिक्लाइन हो जाइछि ड्यू टू अर्बनाइजेशन हैला and concrete structure, vegetation reduce होगला, food availability तंग पे reduce होगला due to these reasons. And sparrows को indicator species हिसाब रे निया जाय reflecting the environmental health. So एटा गोटे local organization जे गोटे गंजाम रे अछि सी अंकर community based conservation ऊपर फोकस करूचंती. and ए conservation drive टा 2012 रे स्टार्ट हेतिला villages रे. इको फ्रेंडली आर्टिफिशियल नेस्ट्स एथरे इंस्टॉल हुए. अर्दन पॉट्स तांका पई रखा जाय. तांकर फीडर बॉक्सेस रखा जाए फॉर फूड सपोर्ट. 6000 आर्टिफिशियल नेस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल हो सारी अक्रॉस 40 विलेजेस. लोकल कम्युनिटी स्पेशली वुमेन एथरे इन्वॉल्व अछंती खास करिकरी. सिग्निफिकेंस होची कि तांकर जो पॉपुलेशन एबे बहुत कमी जाइची तो एथरे तांकर कंजर्वेशन होची. एंड दिस इज आल्सो लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली. कम्युनिटी ओनरशिप जेठी देखिले लोकल कम्युनिटी और स्पेशली वुमेन माने एटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करछंती. इकोलॉजिकल बैलेंस एटी प्रोवाइड होची. कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड सपोर्ट द फूड चेन. अवेयरनेस जनरेट होची. एटी रेप्लिकेबल मॉडल माने बाकी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज आकु रेप्लिकेट करि परिबे एंड पॉपुलेशन को सेटी स्टेबलाइज करि परिबे. चैलेंजेस परसिस्ट करूची जेमति कि एटा लिमिटेड स्केल रो.
देन रेप्लिकेट करबा डिफिकल्ट रेगुलर मेंटेनेंस दरकार को एक्सटर्नल थ्रेट अछि जेमति कि एयर और नॉइज पोल्यूशन ता पई सेमति कि स्टेप्स निया जायनी मोबाइल टावर रेडिएशन केमिकल पेस्टिसाइड्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी मेकिंग रे भी लैकिंग अछि गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्कीम लॉन्च होइछि launched by Odisha government with the foundation stored laid at Banpur. ओके स्कीम रो एम कोन कि जो प्राइमरी एजुकेशन रहला ताको ट्रांसफॉर्म करबा इन रूरल रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज गोदावरीश मिश्र से गोटे ओडिया एजुकेशनिस्ट थिले एंड सोशल रिफॉर्मर थिले से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस भी तांकर देइछन्दी इन प्राइमरी एजुकेशन एंड सोशल अवेकनिंग नेमिंग द स्कीम आफ्टर हिम सिंबलाइजेस द स्टेट्स कमिटमेंट टू ग्रासरूट एजुकेशन रिफॉर्म एंड ये जो स्कीम टा रहिला एटा मॉडल प्राइमरी स्कूल एस्टैब्लिश करबो अक्रॉस ओडिशा बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इक्विटी एक्सेस एंड लर्निंग आउटकम्स ऊपर फोकस करबो रादर देन मियर एनरोलमेंट की फीचर्स होची वन मॉडल प्राइमरी स्कूल इन ईच ग्राम पंचायत हबो गोटिए मॉडल प्राइमरी स्कूल प्रति ग्राम पंचायत रे करा जिवो एंड एटा को फेजेस रे अचीव करा जिवो प्री प्राइमरी रु 8th क्लास जाके रहिबो 100 टा स्टूडेंट मिनिमम रहिबे पर स्कूल देन कैंपस एरिया 2 एकर्स ओवर सेटा बना जीवो डेवलप करा जीवो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो जहाँ भी रहिला सेगुडी को सब इंक्लूड हबो फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ ऊपर स्ट्रांग एम्फसाइज दिया जीवो फाइनेंशियल एंड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स रे स्टेट 12,000 कोटी ऑलरेडी एलोकेट करि सारचंदी 118 टा मॉडल प्राइमरी स्कूल इनिशियली इट हैव बीन टेकन अप इनिशियली लॉन्ग टर्म प्लान टू cover all the 6,000 जितने भी ग्राम पंचायत 6,794 ताको फेज बाय फेज मैनर रे ताको cover करिया पई की प्लान रहिछि सो द स्कीम अलाइन्स विथ द विजन ऑफ सिस्टमैटिक एंड स्केलेबल स्कूल रिफॉर्म्स सिग्निफिकेंस होछि कि एथरे क्वालिटी एजुकेशन रे एक्सेस बढ़ुछि फाउंडेशनल लर्निंग ऊपर एम्फसाइज दिया जाउछि एनईपी सहित अलाइन होछि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होछि देन सोशल इक्विटी जेमति कि हिस्टोरिकली अंडर सब जो ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन माने रहले तांको टारगेट करा जाउछि चैलेंजेस अवेलेबिलिटी एंड ट्रेंड टीचर माने केते अवेलेबल रहबे एंड अवेलेबल हेले भी से माने जॉब छाड़ी आगु को जिबेनी ताकर रिटेंशन इट इज स्टिल अ चैलेंज इन रिमोट एरियाज मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट सस्टेनिंग ताको सस्टेन केमदी करा जिवो तो मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट काइना एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी बना हवा पई की प्लान करा जायछि सो इट इज आल्सो अ चैलेंज लर्निंग आउटकम्स कोन रहइबो देन क्वालिटी एंड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक ए सब भी चैलेंज रहिछि Odisha's first fully solar powered villages under the PM Surya Ghar Yojana. These are tribal dominant villages जेमती मुंडिया साही and कंध देवभूमि ओडिसा रो प्रथम fully solar powered village हिसाब रे से माने हेचंदी से So the initiative has been implemented under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana जोटा कि गोटे ओडिसा रो गोटे major step towards energy access, sustainability and inclusive development. ये जो दीटा जाको विलेज एटा होची ट्राइबल और रिमोट हैबिटेशन एनर्जी पॉवर्टी इन सच रीजन अफेक्ट्स द एजुकेशन हेल्थ केयर लाइवलीहुड डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी एटा इट इज इंक्रीजिंगली व्यूड एज वायबल सॉल्यूशन फॉर लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेशन कवरेज दीटा जाको मु कहली को विलेज कवर करा जाउची देन बेनिफिशियरीज केते रहबे 76 देन इंप्लीमेंटेशन कोन रहइबो लोकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी द्वारा इंप्लीमेंटेड होउची एंटायर इंस्टॉलेशन गोटे शॉर्ट टाइम फ्रेम रे कंप्लीट हबो and funding pattern होची central support through this scheme PM Surya Ghar then state government रो contribution रहइबो आ जो बाकी का cost रहइला remaining cost ताको district mineral foundation funds through रो सेटा दिया जिवो outcome होची 100% household level solar electrification then reduce dependence on conventional grid power significance is universal energy access मिलिबो economic and social empowerment हबो through better education and better lighting better power healthcare service digital connectivity household energy expenditure reduce haba energy security एथरे promote होची climate and sustainability governance innovation these are the significance challenge होची कि जो long term operation और maintenance केमी तको करा जिवो solar infrastructure सेटा गोटे challenge then battery storage
ऊपर जो डिपेंडेंस रही स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज. टेक्निकल कैपेसिटी, लोकल टेक्निकल कैपेसिटी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड ये जो मॉडल टाकू बड़ बड़ विलेज को केमिति स्केल करे कि नबा, स्केलिंग इज ऑल्सो अ चैलेंज. डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर बैम्बू प्रोडक्ट लॉन्च इन ओडिशा. गोटे ओडिशा गवर्नमेंट गोटे डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च करछंदी ओनली फॉर बैम्बू प्रोडक्ट्स एंड वेबसाइट रो ना होची www.odishabamboohart.com. एटा होची गोटे ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर बैम्बू प्रोडक्ट्स जोथि कि मार्केट एक्सेस को एक्सपैंड करा जिवो फॉर बैम्बू, लोकल बैम्बू आर्टिसंस. एटा नेशनल बैम्बू कॉन्क्लेव 2026 रे ए अनाउंसमेंट हेतला बाय द स्टेट्स फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर गणेश राम सिंह खुंटिया. बैम्बू होची गोटे रिन्यूएबल फास्ट ग्रोइंग रिसोर्स जोटा कि क्राफ्ट, फर्निचर, कंस्ट्रक्शन, लाइफस्टाइल इत्यादि प्रोडक्ट्स रे यूज हुए एंड ट्राइबल और रूरल आर्टिसंस मानकर एटा गोटे स्ट्रांग बेस अछि, किंतु तांकर मार्केट रीच, मिडलमैन डिपेंडेंस एंड वीक ब्रांडिंग जोगु तांकर मार्केट रीच बहुत लिमिटेड हे जाइछि. सो दे फेस चैलेंजेस. बट एथरे गोटे डेडिकेटेड वेबसाइट कर दिया गले स्टेट सपोर्ट डिजिटल मार्केट प्लेस. एटा गोटे एटा से माने डायरेक्ट विदाउट एनी मिडलमैन इंटरफियरेंस और डिपेंडेंस से डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करि परिबे. डायरेक्ट से वेबसाइट रे जाइकी से माने तांकर प्रोडक्ट को लिस्ट कले एंड कंज्यूमर माने जाइकी सेठो प्रोडक्ट को परचेज कले. सो दे कैन, इट इज D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक्सेस. सिंगल रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड आइडेंटिटी गोटे क्रिएट हबो. ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तांको मिलुची. ओडिशा बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी रे इतरे इन्वॉल्व अछि. देन सपोर्ट मिलुची बाय पॉलिसी डिस्कशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट ड्यूरिंग द नेशनल बैम्बू कॉन्क्लेव. आर्टिसन, डिजाइनर, मार्केटर एंड पॉलिसी मेकर्स माना इट एनकरेजेस कोलैबोरेशन अमंग देम आल्सो. सिग्निफिकेंस होची कि तांकर मार्केट एक्सपैंड होची. से माने लोकल हार्ट थारु बाहरु को जाई कि एबे से माने तांकर प्रोडक्ट को गोटे वेबसाइट रे लिस्ट करि परिबे. इनकम जनरेशन, ग्रीन इकोनॉमी जेमि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू टिम्बर, प्लास्टिक एंड स्टील. बैम्बू is a sustainable alternative to timber, plastic and steel. Value chain strengthening, digital inclusion, brand Odisha, position Odisha as a hub for eco-friendly and craft-based products. Challenge ki literacy gaps ebe bhi rahichi among the rural artisans. Then logistic, quality control and standardization issues भी involve अच्छी. Consistent supply और timely delivery भी ensure करा जिबारे भी problem आसी पारे. Competition from established e-commerce platforms, बड़ा बड़ा जो e-commerce platforms अच्छी तांको ठारू competition. The need for continuous design innovation and meet the market trends. Fake e-challan scam alert. How to stay safe. फेक ई चालान मेसेजेस एबे देखिबा को मिलिची. increase in number, they have increased in number via SMS, WhatsApp, tricking users into downloading malicious apps or clicking fraudulent links. तो एथरे कोन होची सेमानकर डाटा चोरी होची, डाटा थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉस एंड अकाउंट कॉम्प्रोमाइज. फेक ई चालान फ्रॉड जो माने अछंती फ्रॉडस्टर्स से माने कोन करंती, they pose as traffic authorities and send message claiming an unpaid traffic challan. Okay, and message typically include APK file, fake payment link and urgent language ki urgently payment karibar achi. So once clicked or installed, phone get compromised, personal data is stolen, WhatsApp account may be hijacked, victims are pressurized to pay money outside the official channels. But जो genuine e-challans रहिला, how they work, तांको generate करा जाए only through the authorized traffic systems. Verification available only on official government portals and apps such as M Parivahan. Remember this name, it is very important. M Parivahan app through ताको generate करा जाए. Government agencies, they do not send APK file, but जो fake e-challans रही, they include the APK files or ask for payment via personal links. Red flags. Download on APK file. Again, फेक ई चालान जो माने इशू करंती से माने एपीके फाइल सेंड करंती. नॉट एंडिंग विथ .gov.in, थ्रेटनिंग और अर्जेंट पेमेंट वार्निंग्स, यूपीआई आईडी प्राइवेट लिंक अननोन एप्स थ्रू जदी से माने पेमेंट रिक्वेस्ट पई कहंदी, देन इट इज फेक. स्कैम टे डेंजरस कोन पई, इधर फाइनेंशियल लॉस, आइडेंटिटी थेफ्ट, चेन हैकिंग, डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म उपरु लोक मानकर ट्रस्ट लूज होची.
what to do if you receive a suspicious message कि first तो से link रे click करिया कथा नुहे ओके देन चालान को सब बड़ा ऑफिशियल पोर्टल सहित वेरीफाई करा दरकार देन ब्लॉक द सेंडर जे से फेक ई चालानटा पठाई संगे संगे ताको ब्लॉक करिवो देन साइबर क्राइम अथॉरिटीज मानको रिपोर्ट करिवो इफ यू हैव ऑलरेडी एंड व्हाट इफ यू हैव ऑलरेडी क्लिक्ड अ फेक लिंक देन फोन को तुरंत फ्लाइट मोड रे करिवो देन डिलीट एनी सस्पिशियस ऐप फ्रॉम सेटिंग्स एंड बैकअप एसेंशियल डेटा एंड रीसेट द डिवाइस देन साइबर पुलिस को इन्फॉर्म करिवो चैलेंजेस की लो डिजिटल लिटरेसी अच्छी तो समस्त लिंक रे क्लिक करूचंदी पैनिक क्रिएटेड बाय एनफोर्समेंट डेडलाइंस रैपिड एवोल्यूशन ऑफ फिशिंग टेक्निक्स ओवर रिलायंस ऑन मैसेजिंग एप्स फॉर ऑफिशियल लुकिंग अलर्ट्स नेक्स्ट we will study in our language initiative जोटा कि ओडिसा रे लॉन्च हेची एटा होची गोटे मदर टंग बेस्ड अर्ली एजुकेशन इनिशिएटिव जहार फोकस होची इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड फाउंडेशनल लर्निंग ऊपर बहुत गुड़े ट्राइबल चिल्ड्रेन एमती अच्छा जो मैंने लर्निंग बैरियर फेस करें जो जो घरे जो लैंग्वेज से कथा होती स्कूल जो लैंग्वेज अच्छी से मिसमैच रही इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल लैंग्वेज सो इट जो अर्ली एजुकेशन इन एन अनफेमिलियर लैंग्वेज ऑफन लीड टू पुअर कॉम्प्रिहेंशन लो रिटेंशन एंड अर्ली ड्रॉप आउट्स एंड ये जो इनिशिएटिव एबे लॉन्च है इट अलाइंड विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जे कि एम्फसाइज करे कि मदर टंग इंस्ट्रक्शन दिया जिवो इन अर्ली इयर्स इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट होची वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ओडिशा एंड ड्यूरेशन तार रहिबो 5 इयर्स एंड टार्गेटेड ग्रुप होचंदी 3 रु 6 वर्ष पिला माने प्री प्राइमरी स्टेज ज्योग्राफिकल कवरेज ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट सच एज केउंझर कंधमाल गजपति रायगढ़ नवरंगपुर एंड मालकानगिरी लैंग्वेज ए 6टा लैंग्वेज इतरे कवर हेची जेंदी मुंडा कोई सौरा कुवी गोंडी एंड कोया implementation partners educational and development organization support curriculum design and training now what are the key features are mother tongue instruction दिया जिवो similar to their home language foundational literacy and numeracy पर focus करा जिवो जेमि basic reading हला writing arithmetic skills हला अंगनवाड़ी based delivery एटा स्ट्रेंथन करूचे अंगनवाड़ी सेंटर्स को टीचर एंड वर्कर एमान को ट्रेनिंग करा जिवो ट्रेन करा जिवो ए सब जिंस रे कैपेसिटी बिल्डिंग तंकर करा जिवो कल्चरली रेलेवेंट लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करा जिवो इन लोकल स्टोरीज यूज ऑफ लोकल स्टोरीज विजुअल्स एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कंटेंट now what is the significance कि learning outcome इतरे improve होबो drop out rate reduce होबो cultural inclusion इतरे cultural inclusion को respect मिलबो equity in education address होबो holistic child development होबो challenges की trained educators माने नहांती shortage अच्छी standardization of teaching material across the language is a problem monitoring learning outcomes is a problem especially in remote and scattered habitations sustained community ensure करिबा तांकर engagement ensure करिबा over 5 years it is a problem so ए जो initiative टा रहिला ताको scale करिबा beyond the pilot district is a challenge so training and support मिलिबा दरकार to अंगनवाड़ी workers and educators monitoring and evaluation होबा दरकार scale up हवा दरकार ताको on evidence and impact assessment community participation is necessary education and child development programs broader करा जिबा दरकार आईआईटी भुवनेश्वर गोटे सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करछि फॉर बॉक्साइट एक्सप्लोरेशन रिसर्चर्स माने जो रहिला आईआईटी भुवनेश्वर से माने गोटे कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करछि टू आइडेंटिफाई द बॉक्साइट बियरिंग जोन्स बॉक्साइट होछि प्राइमरी ओर ऑफ एल्युमिनियम ओके एंड ओडिसा रे इंडिया रे जत्ते भी बॉक्साइट कंसंट्रेशन अछि ओडिसा इट होल्ड्स ओवर हाफ ऑफ इट इन द ईस्टर्न घाट्स लार्जली कंसंट्रेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स सो आकर जो एक्सप्लोरेशन टा होछि इट इज नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव एंड एनवायरमेंटली डिसरप्टिव एंड एबे जो टेक्नोलॉजी टा डेवलप करा जाय छै सेटा होछि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एटा को यूज करके से माने बॉक्साइट रिच जोन्स को आइडेंटिफाई करिवे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को एनालाइज करिवे ऑफ मिनरल्स then it integrates the satellite imagery field survey geochemical and petrographic analysis laboratory spectral validation it enables the first order mineral mapping what are the key features non invasive and eco friendly eta cost effective भी रहिबो large area coverage करा जाउची जेमति कि potential mineral zones जो रहला कोरापुट and रायगड़ा districts सेटा it allows rapid identification of those areas as well scalable approach रहुची can be adapted for exploration of other minerals beyond the bauxite significance
सिग्निफिकेंस रे मिनरल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक मिनरल सिक्योरिटी सपोर्ट करा जाउची देन सस्टेनेबल माइनिंग साइंटिफिक एडवांसमेंट एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग एंड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी एथरे यूज हबो पॉलिसी यूटिलिटी एंड रीजनल डेवलपमेंट चैलेंज होची कि हाई रिजोल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा एटा को यूज करा जिवा पई हाई कॉस्ट दरकार ग्राउंड वैलिडेशन ର need ରହିଛି to confirm satellite based finding requirement of specialized technical expertise in data interpretation accessibility issue ରହିଛି in dense forest and hilly terrains for validation work निपा भाइरस केस किछि भी मिलिनी ओडिसा रे ओडिसा कंफर्म करछि कि किछि भी सस्पेक्टेड कंफर्म निपा भाइरस केस नाही निपा भाइरस होछि गोटे जूनोटिक भाइरस जोटा कि acute respiratory illness of encephalitis माने brain inflammation cause करे it has a high case fatality rate natural reservoirs अंकर होचंदी fruit bats जोटा को pteropus species एटा गोटे transmission occurs through contaminated food bat saliva or urine close contact with the infected persons exposure in healthcare settings without adequate protection ei through ru nipah virus transmit hei paribo and what are the preparedness measures in odisha ki surveillance को बढ़ाई दिया जाइछि health system readiness the isolation facilities ppe kits essential medicines को ready रखा जाइछि rapid response protocols interdepartmental coordination risk communication these are the preparedness measures significance होछि early preparedness early prepare odisha रहिछि then public reassurance की किछि भी सेमति किछि जेमति cases report हेनी so the official confirmation एटा जेतले से माने confirm कर देले it reduces misinformation and public anxiety health security one health approach recognizes link between human health animal reservoirs and environmental factors challenge ki asymptomatic early stage infection ro possibility achi escaping the detection interstate movement increase expose risks rapid diagnostic capacity over dependence misinformation ro spread gore population रे rise देखा जाइछि in Debrigold wildlife sanctuary the figure indicates consistent rise in population this figure 848 okay gore Indian bison भी ताको कुहा जाए scientific name होची बॉस गॉरस largest wild cattle species आकु list करा जाइछि as vulnerable on the IUCN red list protected under the schedule 1 of the wildlife protection act एटा गोटे keystone of flagship species influencing forest structure and predator dynamics census period थिला January 5 to 7 direct count camera trap and pressure impression pads through ru census conduct हेतिला 30% juveniles ochandi around so it indicates healthy breeding also reasons for population increase ki specific habitat management improve heichi food availability improve heichi stricter protection achi against poaching pressure and continuous monitoring bhi chali rahichi scientific monitoring hochi regular censuses conduct hochi ecological significance herbivore balance then predator species को support मिलुची good habitat quality ecosystem health western odisha landscape ର biodiversity resilience enhance होची socio economic significance ର wildlife tourism potential एते strengthen होची local employment ecotourism based livelihood एते generate होची wildlife conservation practices एते successful महानदी वाटर डिस्प्यूट महानदी वाटर डिस्प्यूट एटा ओडिशा और छत्तीसगढ़ भितर तो गोटे लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम समस्त जानथिबे बैकग्राउंड होची जो महानदी जोटा कि सिहावा हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़ रो बाहरिची इट फ्लोज थ्रू ओडिशा माने ओडिशा कोन हैला डाउनस्ट्रीम स्ट्रेट हे गला एंड इनटू द बे ऑफ बंगाल सो जहाँ भी छत्तीसगढ़ बैरेज डैम आउ डाइवर्सन स्ट्रक्चर सेठी फॉर्म करछि तो सेटा डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो को रिड्यूस करछि की इश्यूज रे जेमति कि अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर एबे कहली डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट जेमति एग्रीकल्चर हैला इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर ए सब इंपैक्ट पड़ुछि इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ुछि डाटा एंड ट्रांसपेरेंसी डिसएग्रीमेंट ओवर हाइड्रोलॉजिकल डाटा फ्लो मेजरमेंट्स एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट लीगल इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन रे हम जे देखियो जबा ई जो डिस्प्यूट रहिछि इट इज एजुकेटेड बाय द महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जोटा कि 2018 रे
constitute हेतिला and a tribunal टा interstate river water dispute act 1956 under रे set up हेजी and it has power of a civil court and award होजी binding on both states award binding एटा मने रखिबे and power of a civil court alongside legal proceeding ओडिशा negotiation और political consensus building ପାଇଁ कि भी pursue करिछि federal and governance concern जेमति interstate river governance ऊपर चैलेंज रही इक्विटेबल वाटर शेयरिंग है डाउनस्ट्रीम स्टेट्स मानकर जो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल कंसेंसस रे भी डिले रोची वाटर डिमांड बढ़ी बढ़ी चलती ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एगुड़ा सब इंटेंसिफाई होची सो दिस इज अ प्रॉब्लम एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक इंप्लिकेशंस भी रही जेमति एग्रीकल्चर लाइवलीहुड इकोलॉजी एंड क्लाइमेट स्ट्रेस जोगु जदि अपस्ट्रीम जो स्टेट्स माने रहिले जदि से माने किछि यूनिलैटरल डिसीजन लो जदि जेमति कि बैरेजेस हला डैम्स कंस्ट्रक्ट करिवे तो ए सब अफेक्ट हबो डाउनस्ट्रीम स्टेट्स रे now what are the challenge कि जो prolonged and complex tribunal proceedings upstream projects basin level integrated river management framework ର lacking political indifference intersectoral competition एगुडी होची challenges जोटा कि एबे भी persist करछि ओडिशा fast tracks major road project to boost the connectivity government of odisha से implementation को accelerate करिसेंती of major road and highway projects to improve the interstate connectivity regional integration and economic growth जोटा कि backward tribal coastal and industrial region ऊपर further focus करूचे the background are poor road connectivity has historically constrained industrial expansion market access for farmers msmes several regions of western and southern odisha face terrain related and developmental disadvantages and jo key road project rahila being fast tracked state highways and major district roads upgradation to all weather wider carriageways improved payment quality and road safety features national highway projects connectivity to aspirational and tribal districts जेमति कि केबीके ऊपर बेसी फोकस रहिबो urban rural link roads better last mile connectivity to ग्राम पंचायत ओके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी कोन कि गोटे टाइम बाउंड गोटे जेति कि टाइम से माने फिक्स करथिबे सेही टाइम भितर ही एग्जीक्यूट करबा को ताको ट्राई करिवे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एथरे बेटर सिंक्रोनाइज हेकि रहिबो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जेमति कि जीआईएस बेस्ड प्लानिंग ई मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स क्वालिटी ऑडिट्स यूजिंग द थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस फंडिंग कन्वर्जेंस स्टेट बजेट सेंट्रल आउ बाहर जहाँ भी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट रहिला ताको कंबाइन करा जबो एथरे सो सिग्निफिकेंस के एथरे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हबो लॉजिस्टिक आउ मूवमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज सेटा बेटर हे जिवो इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट बूस्ट हबो सोशल डेवलपमेंट जेमि हेल्थ केयर एजुकेशन वेलफेयर सर्विस इंप्रूव हबो रीजनल बैलेंस हबो एथरे and disaster resilience जेमति कि better evacuation and relief movement हे परिबो what are the challenges कि एसो प्रोजेक्ट कंडक्ट तो हबो बट जो लैंड एक्विजिशन सेति पई हबो सेतरे डिलेज रही छै एंड लोकल रेजिस्टेंस रही छै इन सम स्ट्रेचेस एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस कांस्टेंट्स अछि प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड मटेरियल शॉर्टेजेस एटा बढ़ी पारे आगु को जाई कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंश्योर करि पारे एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस करि पारे भी प्रॉब्लम आसी पारे देन स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन रे को इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी सहित बैलेंस करबा भी गोटे चैलेंज एनुअल डॉल्फिन सेंसस जोटा कि चिलिका लेक रे स्टार्ट हेतिला ओडिसा रे एनुअल डॉल्फिन सेंसस जोटा प्रति वर्ष हुए चिलिका लेक रे सेटा स्टार्ट हेतिला चिलिका लेक होची एशिया रो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून जोटा कि केते डॉल्फिन बढ़िले कि कमिले तांकर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न गोटे एरिया रे जदी एतरा डॉल्फिन अछंती आ गोटे एरिया रे भी तांकर डिस्ट्रीब्यूशन इवन अछि कि अनइवन अछि एंड हैबिटेट हेल्थ से माने जो हैबिटेट रहउछंती सेटा हेल्दी अछि कि नाही सो चिलिका होची ओनली habitat of Irrawaddy dolphins in India मन रखिबे कहारो Irrawaddy dolphins रो काइना dolphins रो आहुरी भी species अछि अलगा अलगा so Chilika is the only habitat of Irrawaddy dolphins in India and Chilika हो जोडे Ramsar site dolphins होचंते apex predators and bio indicators about dolphin census एटा को कंडक्ट किए करे चिलिका डेवलपमेंट एजेंसी मेथड होची कि बोट रे बसी कि जिबे से माने डायरेक्ट साइटिंग मेथड गोटे कंडक्ट करंती देन सेक्टर वाइज काउंटिंग टू अवॉइड डुप्लीकेशन देन से माने सेक्टर वाइज काउंटिंग करंती टू अवॉइड डुप्लीकेशन then synchronized monitoring across the dolphin habitats convergence zones outer channel central northern and southern sector species एथरे कोन कोन कवर होय Irrawaddy dolphin जोटा कि fresh water brackish water species गोटे and occasional sightings of the bottlenose dolphins in the outer channel areas importance होची कि dolphins मानकर status कोन होची endangered आ गोटे आ पूर्वर मु टाइगर कहितली कमेंट रे समस्त मते कोन जो माने कि ऑनलाइन अछंती कि टाइगर रो स्टेटस कोन इन द IUCN रेड लिस्ट
Dolphin होचंदी endangered, Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, sensitive to water pollution, boat traffic, fishing net entanglement. Presence indicates the balance salinity, prey availability, water quality. Significance of the census होची population assessment, केते population ताकर trend कोन बढ़िले कि कमिले कि stagnant अछंदी, survival rate, habitat management ते जो habitat रोचन सेटा healthy अछि कि नहीं, policy and planning, conservation success, community linkage ए सब होची significance. Then what are the challenges कि जो motorized boats and tourism pressure रहिला सेटा तांको ऊपर गोटे pressure form करूची, entanglement in the fishing nets, then pollution, climate driven changes, these are the challenges. ओडिशा मेघालय गोटे पैक्ट साइन करछन्ती ए दीटा स्टेट परस्पर मध्यरे टू स्ट्रेंथन द अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट ECCD. ओके एंड एटा नॉलेज शेयरिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऊपर फोकस करिवो को मानकर 0 to 6 ईयर एज ग्रुप. 0 to 6 ईयर माने जोडा अर्ली चाइल्डहुड आमे कहूचे एटा मोस्ट क्रिटिकल थाए ह्यूमन डेवलपमेंट पई की फॉर देयर कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ. आ बोथ द स्टेट से माने एमिति किछि चैलेंज अछि जोटा कि कॉमन रही छि दीटा को स्टेट रे, जेमति कि माल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग हला, लर्निंग गैप्स हला, कैपेसिटी कांस्टेंट्स हला से माने फेस करछन्ती. सो अर्ली चाइल्डहुड केयर forms the foundation of human capital development. About Odisha Meghalaya Pact, nature of agreement होची एटा गोटे interstate, core objective होची nutrition, early learning, care और protection. Key focus area होची policy implementation, program monitoring and evaluation, institutional capacity building, institutional framework होची cooperation between women and child development department of both states. Key areas best practice से माने शेयर करिवे परस्पर मध्य कैपेसिटी बिल्डिंग हबो, अंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर और ऑफिशियल्स मानकर करिकुलम एंड पेडागोजी ऊपर फोकस रहिबो, प्ले बेस्ड एक्टिविटी ओरिएंटेड करिकुलम एंड करिकुलम रहिबो, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कन्वर्जेंस जेमति कि हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को इंक्लूड करा जिवो बा इंटीग्रेट करा जिवो विथ ECCD. मॉनिटरिंग एंड डाटा सिस्टम ऊपर भी फोकस रहउची. सिग्निफिकेंस होची कि चाइल्ड डेवलपमेंट आउटकम से इंप्रूव हबो, इंटरजेनरेशनल डिप्रिवेशन जो रहउची सेटा को रिड्यूस हबो, फ्रंटलाइन इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होची जेमति कि अंगनवाड़ी सेंटर्स हला as early learning hubs, फेडरल कोऑपरेशन एथरे मेंटेन रहउची. नेक्स्ट ओडिशा एग्रीकल्चर ड्रॉट मिटिगेशन प्रोग्राम OADMP लॉन्च हेची. ओडिशा एग्रीकल्चर ड्रॉट मिटिगेशन प्रोग्राम OADMP लॉन्च करची to strengthen the resilience of the agriculture sector against the current droughts. A program capacity climate adaptive farming, water security और livelihood stability ऊपर फोकस करूची. erratic rainfall, delayed monsoon और dry spell होची ओडिशा रो प्रॉब्लम. सो ओडिशा रो गोटे large part of its western and southern Odisha they are drought prone. Okay. So एथरे गोटे contrast रहउची. Climate change has increased the frequency and intensity of the drought events जोटा कि further increase हेची due to climate change. OADMP होची गोटे state led climate resilient agriculture program जोटा कि crisis response रू shift करिकी केमिति long term drought preparedness को डिजाइन करा जिवो ता ऊपर फोकस करूची. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट करूची. एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस को कन्वर्ज करे जिवो केमिति ता ऊपर एम्फसाइज करूची. Yes, answer asichi endangered. Yes, tiger is endangered according to IUCN red list. Very good. Chandray Hembram, very good. So key components कोन रही छै कि climate resilient cropping systems, drought tolerant and short duration crop varieties एतरे promote हबो, millet, pulses and oil seeds for example. Water conservation and management एतरे strengthen हबो through minor irrigation structures. Rainwater harvesting एतरे promote होची. Soil moisture conservation practices एतरे promote होची. Then sustainable farming practices एतरे आ ऊपर focus करा जाउची.
लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन जमती कि लाइव स्टॉक है फिशरीज है एग्रो फॉरेस्ट्री है जमी अलाइड ये सब कौन एगुड़ा हूँ अलाइड एक्टिविटीज तो एगुड़ी को भी सपोर्ट मिल कैपेसिटी बिल्डिंग हम फार्मर्स मानकर ना व्हाट आर द सिग्निफिकेंस कि ड्रॉट वल्नरेबिलिटी रिड्यूस हो इनकम स्टेबिलिटी बढ़ो कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो अलाइड एक्टिविटीज को भी सपोर्ट मिलूँ जमती कि लाइव स्टॉक फिशरीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री रहा फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जमती कि मिलेट्स एंड पल्सेस को प्रमोट करा जाउची सस्टेनेबल रिसोर्स यूज एफिशिएंट यूज ऑफ द वाटर को एनकरेज करा जाउची एंड सॉइल रिसोर्स को एनकरेज करा जाउची क्लाइमेट अडैप्टेशन अलाइंस एग्रीकल्चर पॉलिसी विद द लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलियंस गोल्स कंक्रीज बुल शोकेस्ड एट द मत्स्य प्राणी समावेश ओडिशा 2026 ओके कंक्रीज बुल एटा गोटे मेजर अट्रैक्शन हिसाब रे प्रूव होइचे एट द मत्स्य प्राणी समावेश ओडिशा 2026 जोटा कि गोटे एटा होचे गोटे इंडिजिनियस कैटल ब्रीड कंक्रीज होचे इंडिया रो ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट इंडिजिनियस कैटल ब्रीड गुजरात राजस्थान रीजन रे एटा नेटिव बट अक्रॉस इंडिया को वैल्यू करा जाए सवाई चाल पई कि एटा होचे तार गोटे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक रॉयल गेट जोटा कहती डुअल पर्पस ब्रीड एटा मिल्क प्रोडक्शन पे भी यूज करा जाए देन ड्राफ्ट पावर पे भी यूज करा जाए इन एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक है हाई एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ अच्छी डिजीज रेजिस्टेंस और अडैप्टेबिलिटी माने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस रे भी से इजीली अडैप्ट करि जिवो लो क्वालिटी फॉडर एंड लिमिटेड वाटर रे भी सर्वाइव करि परिबो लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ रही कंपेयर टू एक्सोटिक एंड द क्रॉस ब्रेड कैटल अबाउट मत्स्य प्राणी समावेश एटा गोटे स्टेट लेवल एग्जीबिशन platform for farmers, breeders, researchers, policymakers. It aims to promote the sustainable livestock practices and the genetic conservation. Significance of showing Concrete bull, the significance कौन रही जमती कि एटा होची गोटे इंडिजिनियस ब्रीड तार कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रा सस्टेनेबिलिटी काइना आर जो ड्रॉट कैपेबिलिटी रही it reduce the dependence on the fossil fuel based mechanization climate resilience ये better adapted to heat stress and water scarcity rural livelihoods support small and marginal farmers dependent on the animal power genetic improvement programs concrete genetics are used in selective breeding and cross breeding initiatives broader importance of indigenous cattle india रा livestock biodiversity को preserve करबा एटा भीतर गोटे importance low input cost organic farming natural manure based agriculture nutritional security farm sustainability these are the importance Padma Awards Odisha contribution to Indian art culture and education Republic Day रे 4 जण eminent personality Odisha रो तांको पद्मश्री अवार्ड मिलिची the award is represent folk theatre tribal literature handloom craftsmanship and the education or folklore एंड जो पद्मा अवार्ड रहा एटा को इंस्टीट्यूट हेतला फर्स्ट स्टार्ट हेतला 1954 रे मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट फैक्ट पद्मा अवार्ड्स आर इंडियाज मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ओके फर्स्ट आसीबो कैटेगरीज होची फर्स्ट आसीबो पद्म विभूषण पद्म भूषण देन पद्मश्री पद्म विभूषण एक्सेप्शनल सर्विस पई दिया जाय पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस देन पद्मश्री भी डिस्टिंग्विश सर्विस एंड आंको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्म करंती अवार्डटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को द्वारा दिया जाए art literature education social work science and engineering public affairs okay and किए पाइछन एथरक अवार्ड फर्स्ट होछंदी सीमांचल पात्र सीए सखी नाटक एंड प्रहलाद नाटक फोक थिएटर आर्टिस्ट जने ओडिया फोक थिएटर ट्रेडिशनल ओडिया फोक थिएटर को प्रिजर्व करिया पई तांको अवार्ड मिलिछि चरण हेम्ब्रम से जने संताली ऑथर कंपोजर एंड कल्चरल एक्टिविस्ट तांको संताली लैंग्वेज ट्राइबल लिटरेचर एंड इंडिजिनियस डांस ट्रेडिशन को प्रमोट करबा को मिलिछि शरद कुमार पात्र से होछने टाई एंड डाई हैंडलूम आर्टिसन जने मास्टर तांको his handloom fabrics are traditionally offered to Lord Jagannath also during festivals in Puri Mahendra Kumar Mishra linguist educationist and folklorist okay documented tribal myths songs and proverbs it played a key role in Odisha's multilingual education MLE policy. UNESCO anku UNESCO ro International Mother Language Award भी मिली Key cultural and educational themes highlighted. Folk theatre.
एथरे फोक थिएटर जो अछि म्यूजिक डांस नरेशन ड्रामा एगुड़ा सब हाईलाइट हेची ए सब ट्रेडिशनल आर्ट देन ट्राइबल लैंग्वेज प्रिजर्वेशन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ओके तो आमे कोड थिले हाँ एसबुरे तांकर कंट्रीब्यूशन रही नेक्स्ट ओडिशा पट्टचित्र सेटा शोकेस करा जाइतिला IICDEM 2026 रे ओके ओडिशा जो ट्रेडिशनल पट्टचित्र पेंटिंग अच्छी सेटा को शोकेस करा जाइतिला इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IICDEM जोटा कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली रे ऑर्गेनाइज होइतिला एंड एटा को ऑर्गेनाइज करथिले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पट्टचित्र आर्ट ऊपर टिके देखिबा पट्टचित्र आर्ट होची क्लासिकल ओडिसा रा क्लासिकल स्क्रोल प्रिंटिंग ट्रेडिशन जोटा कि 10th सेंचुरी रो चली आसीसी क्लॉथ ऊपर एटा क्लॉथ कैनवास ऊपर एटा पेंट करा जाय यूजिंग नेचुरल कलर्स एंड तांकर कॉमन थीम होची लॉर्ड जगन्नाथ एंड टेंपल ट्रेडिशन ऑफ पुरी कृष्ण लीला रामायण महाभारत पट्टचित्र IICDEM पाइंगी मैटर कौन पाई करे जो आर्ट वर्क्स रहिला दे वर प्रेजेंटेड टू इंटरनेशनल डेलीगेट्स एज सिंबॉलिक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया initiative it was inspired by the interactions between election officials and artisans from the Raghurajpur heritage village during earlier engagements एटा रिफ्लेक्ट करे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रहिला दे आर स्ट्रेंथेन्ड थ्रू द कल्चरल आइडेंटिटी एंड सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी कल्चरल डिप्लोमेसी को गोटे सॉफ्ट पावर टूल हिसाब रे एठी निया जाईची ग्लोबल विजिबिलिटी एंड फॉर ट्रेडिशनल आर्ट एठी ओडिया रा जो इंडिजिनियस आर्ट फॉर्म रहिची द इंटरनेशनल कल्चरल डिस्क्लोजर मिलिची Artisan empowerment ithre hochi cultural federalism it highlight the role of the state like Odisha in shaping India's national cultural identity tourism heritage promotion strengthens the Odisha image as a center for living heritage and cultural tourism broader cultural relevance पट्टचित्र इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करे जोटी स्किल और नैरेटिव्स को अक्रॉस जनरेशंस ट्रांसमिट करा जाए इट शोज हाउ आर्ट डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिटी इंटरसेक्ट विथ मॉडर्न गवर्नेंस चैलेंज हो कि कमर्शियलाइजेशन रो रिस्क रही इनसिक्यूरिटी फॉर आर्टिसंस इनकम इनसिक्यूरिटी फॉर आर्टिसंस डायरेक्ट एक्सेस एबे लिमिटेड सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन रो नीड रही एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रो प्रोटेक्शन रो भी नीड रही ओडिशा डिस्कम्स लीड नेशनल पावर रैंकिंग्स टाटा पावर लेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स ऑफ ओडिशा से टॉप नेशनल रैंकिंग हासिल करछनी इन 14th इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज एंड जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा रिलीज करा जाए दिस मार्क्स द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर आ पूर्व 2 वर्ष रे भी से फर्स्ट रैंक आनिथिले पावर डिस्कॉम्स आर रिस्पांसिबल लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी ओके देन ओडिशा फर्स्ट इंडियन स्टेट हेजी टू प्राइवेटाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन विथ टाटा पावर देन पैरामीटर्स कौन इवैल्यूएशन रो ऑपरेशनल एफिशिएंसी चारिटा पैरामीटर रही फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई कंज्यूमर सर्विस डिलीवरी एंड ग्रीवेंस रिट्रेसल now what are the significances कि पावर रिलायबिलिटी इंप्रूव होईची फाइनेंशियल वायबिलिटी एथरे इंप्रूव होईची इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को एठी बूस्ट मिलुची रिलायबल पावर सप्लाई अट्रैक्ट द इंडस्ट्रीज एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो रीजन रे पावर सप्लाई कंसिस्टेंट से रीजन रे इन्वेस्टमेंट बढ़िबो इंडस्ट्रीज आसीबो काइना इंडस्ट्रीज को चलियो पे फैक्टरीज वेरिका पे पावर सप्लाई कंटिन्यूस थिबा दरकार मॉडल ऑफ फॉर अदर स्टेट्स रेप्लिकेबल मॉडल टेम्पलेट एटा अन्य स्टेट माने तांकर नीड आउ रिक्वायरमेंट हिसाब रे टेलर करिकी
आकु रेप्लिकेट करि परिबे निज स्टेट रे कंज्यूमर बेनिफिट्स बेटर सर्विस डिलीवरी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सप्लाई कंटिन्यूटी CM inaugurates India's first aluminum flat rolled product इंडिया प्रथम aluminum flat rolled product CM inaugurate करिसेंती with a battery foil unit at Lapanga Sambalpur district project had been set up by Hindalco Industries Limited under its Aditya aluminium expansion plan ओडिशा रे bauxite reserves बहुत रही छी इंडिया रो लीडिंग aluminum producing state भितर गोटे historically India focused more on the primary aluminum production nearly 40% जो इंडिया रो flat roll aluminum demand रही छी ताको import through रू इंडिया आनी थाए therefore ए प्रोजेक्ट ता बहुत इंपोर्टेंट अबाउट एल्युमिनियम एफआरपी प्रोजेक्ट कह गले एटा लोकेशन होची लपंगा की कंपोनेंट होची एफआरपी यूनिट और बैटरी फॉइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहिबो एंड एफआरपी यूनिट पई की दिस मच क्रोर एंड मैन्युफैक्चरिंग बैटरी फॉइल यूनिट पई की 834 crore and 5000 direct or indirect jobs एथरे क्रिएट हबो डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग ओडिसा रे हबो एल्युमिनियम फ्लैट रोल बट एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स होची एल्युमिनियम शीट प्लेट और फॉइल जोडा की रोलिंग प्रोसेस रे आकु बना जाए एटा को इलेक्ट्रिसिटी लिथियम ऑयल बैटरीज डिफेंस एरोस्पेस ए सब रे आकु यूज करा जाय परबो आ बैटरी फॉइल कहे गले बैटरी फॉइल होची गोटे क्रिटिकल कंपोनेंट इन द करंट कलेक्टर इन लिथियम आयन बैटरीज एसेंशियल फॉर ईवीज एंड एनर्जी स्टोरेज सिग्निफिकेंस होची इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो 40% अराउंड इंपोर्ट आणुची इंडिया टू मीट इट्स डिमांड तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एते क्रिएट हबो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एते बूस्ट मिलिबो वेस्टर्न ओडिशा रे industrialization habo skill development and employment is also a significant strategic national importance of defense renewable energy और electric mobility रहिला सेगुडी का strengthen हबो alignment with the national priorities make in india और आत्मनिर्भर भारत goals को priority मिलिबो demand for whale skeleton museum in odisha's coastal region लोक माने डिमांड एटी जनरेट करछन कि गोटे whale skeleton museum को ओडिशा कोस्ट रे म्यूजियम बना जाऊ whale stranding and skeleton recovery जो मिलुची तो तांको सेठी रखिया पाएंगे 480 किलोमीटर ओडिसा रो कोस्ट लाइन अछि तो एथरे whale और dolphin strandings पीरियडिक हुए सो गोटे डेडिकेटेड मैराइन मैमल इंटरप्रिटेशन और स्केलेटल म्यूजियम एटी बना जाऊ तो एटी लोकल्स माने डिमांड एटी रेज करछंती कोन पई गोटे whale skeleton museum डिमांड हेछि कि साइंटिफिक एंड एजुकेशनल वैल्यू सेठी बॉडीबो मैराइन मैमल एनाटॉमी इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी को जानी बारे अंडरस्टैंड करि बारे हेल्प मिलिबो कंजर्वेशन मेजर्स कंडक्ट हबो देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिकवर्ड स्केलेटन्स जो ओडिसा रो कोस्ट जोटा कि अंडर यूटिलाइज हेई कि अछि ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जदी whale skeletons सेठी रिकवर होउची सो देयर इज अ चांस ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन research facilitation biology zoology and environmental studies को support मिलिबो देन cultural and ecological identity coastal and marine biodiversity state हिसाब रे ओडिसा रो जो आइडेंटिटी रही छी सेटा रीइनफोर्स हबो पोटेंशियल लोकेशन हो जे पूरी गंजाम केंद्रापड़ा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ए सब डिस्ट्रिक्ट माना करे ऑलरेडी दे अट्रैक्ट टूरिस्ट्स एंड आर क्लोज टू मरीन कंजर्वेशन जोन्स ओके ब्लैक बक सेंसस ओडिसा रे फिनिश हेची एंड गोटे पॉजिटिव कोडी हेची गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे एंड गोटे पॉजिटिव ट्रेंड देखिया को मिलची तांकर पॉपुलेशन रे साइंटिफिक नेम होची एंटीलोप सर्वाइकाप्रा एंड एटा होची ग्रासलैंड डिपेंडेंट एंटीलोप स्पीसीज गोटे आर स्टेटस होची इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द WPA एक्ट 1972 एंड इट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज नॉर्दर्न घुमसार नॉर्थ और साउथ घुमसार फॉरेस्ट डिवीजन एंड बरहमपुर फॉरेस्ट डिवीजन एतरे इंक्लूड हेतले सेंसस रे एंड मेथोडोलॉजी जेमति की फील्ड टीम पठा जाइतिला फॉरेस्ट स्टाफ एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स माने पार्टिसिपेट करथले मॉर्निंग एंड इवनिंग से माने दीटा फेज रे जाई की काउंटिंग करथले ऑब्जेक्टिव की केते तांकर पॉपुलेशन रहिला तांकर कंजर्वेशन मेजर्स रो इफेक्टिवनेस कोन अछि हैबिटेट तांकर केमति अछि ए सब को ऊपर फोकस करी की सेंसस ता बनेबा सिग्निफिकेंस कंजर्वेशन सक्सेस रो असेसमेंट ग्रासलैंड कंजर्वेशन wildlife management scientific wildlife management planning patrolling and resource allocation community involvement biodiversity protection challenges habitat fragmentation जो grassland रहिला agriculture और infrastructure conservation it is also a challenge human wildlife conflict poaching risk grassland policy focus limited रही data accuracy
भी एतटा नाही सो दिस आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व इंपोर्टेंट होची मन रखिबे तार स्टेटस कोन को हैबिटेट रे से रुहे देन इंडिकेटर स्पीसीज से एंड प्रीलिम्स पाई पॉइंटर्स मु रिकॉल करै दोची ओके एंड पॉपुलेशन ट्रेंड रे पॉजिटिव ग्रोथ देखिबा को मिलची ओडिशा लॉन्चेस एग्रीकल्चर ड्रॉट मिटिगेशन प्रोग्राम जस्ट एटा ऊपर डिस्कस हेची आपको गो थ्रू करनेबे सिमिलर न्यूज अच्छी नेक्स्ट आमे जिबा फैक्ट्स एंड फिगर्स रे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क नॉर्थ ईस्ट पैनोरामा एटी टी रिवाइज करबा 5.17 एकर्स रे हबो सेटा 10 टा हैबिटेट बेस्ड एनक्लोजर्स एतरे डेवलप करा जायछि 1.6 एकर्स रो गोटे डेडिकेटेड हॉर्टिकल्चर विंग क्रिएट करा जायछि एंड चिलिका लेक होछि एशिया रो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इटी मो कहि दोछि एठी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देछि इट इज इक्वली इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस specifically very important for prelims जेमति कि चिलिका लेक होछि एशिया रा लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट एटा 1981 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट करे इरावाडी डॉल्फिन हो एटा होछि ओनली हैबिटेट इन इंडिया देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे गौर पॉपुलेशन इंक्रीज हेछि 848 को आगु 659 थिले तापर वर्ष 788 थिले देन 848 3 इयर्स हेलानी तांकर consistent increase in population देखिबा को मिलुछि सेंसस रे and it was the third census that was conducted sanctuary area hoji around 353 square kilometer black buck census jodai ganjam re hitla north and south bhumsar barampur division re and black buck they are protected under schedule 1 wildlife protection act 1972 tiger census re initiated in bhumsar forest division part of the eastern ghat landscape tiger ankara status hoji endangered in the IUCN red list okay sparrow conservation पाई 6000 plus artificial nest तांकर ऑलरेडी इंस्टॉल हेची एग्रीकल्चर क्लाइमेट एंड रूरल डेवलपमेंट ओडिशा एग्रीकल्चर ड्रॉट मिटिगेशन प्रोग्राम एटा लॉन्च हेची आउटले होची 141.50 करोड़ तीनटा ब्लॉक रे कोमा कोसागमुंडा एंड रारवान कवर्स 24000 फार्मिंग हाउसहोल्ड्स नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड द्वारा एटा फंडेड उडंती रिवर इशू रिवर फ्लोज फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू ओडिशा इंटरस्टेट रिवर एटा गोटे जॉइनिंग तेल रिवर महानदी इकोसिस्टम ओके सोलर पावर्ड विलेज मुंडिया साही एंड कंधा देवभूमि फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज माने ओडिसा रो 76 बीपीएल हाउस होल्ड होचन याकर बेनिफिशियरी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना डीएमएफ फंडिंग सपोर्ट द्वारा एटा इंप्लीमेंटेड पावर सेक्टर रे ओडिसा डिस्कम से माने पुनी थरे रैंक 1 तांकर आसीची इन 14th इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रैंकिंग 3 इयर्स हेलानी से माने रैंक 1 आनुचंदी टीपीसीओडीएल और टीपीएनओडीएल A+ ग्रेड तांको मिलिची टीपीडब्ल्यूडीएल को A ग्रेड मिलिची ओडिसा होची फर्स्ट एमपी स्टेट टू प्राइवेटाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन Aluminium manufacturing रे इंडिया रो फर्स्ट aluminium flat rolled product FRP unit inaugurate हेची लपंगा संबलपुर रे FRP unit पाई की 5000 crore and battery foil unit पाई की 834 crore इन्वेस्टमेंट हेची एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 5000 प्लस जॉब्स एटी क्रिएट करा जिवो अराउंड 40% इंपोर्ट डिपेंडेंस एतरे रिड्यूस हबो गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्कीम रे 12000 crores एतरे बजट एलोकेट करा जायछि फेज 1 पई की 118 मॉडल स्कूल ऑलरेडी लॉन्च हेई सरलानी टारगेट होछि कि सब जगह जो ग्राम पंचायत रहला 6794 ग्राम पंचायत को कवर करबा वी विल स्टडी इन आवर लैंग्वेज इनिशिएटिव एटा होछि गोटे टारगेट एज ग्रुप 3 to 6 इयर्स पई की 6 टा ट्राइबल लैंग्वेज रो कवरेज रहिछि 5 इयर्स पई एटा हबो ओडिशा मेघालय ECCD MOU फोकस रही 0 to 6 इयर्स 3 वर्ष पई कि एटा करा जिवो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी गोटे एठी इंस्टीट्यूट हेची फॉर इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म SSCPD NIEPID MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जोड़ा साइन हेची फॉर होम पर्सनल विथ intellectual disabilities not PWDs with intellectual disabilities पद्मा अवार्ड्स चैरिटी पद्मश्री अवार्डीज अछदी एथरक ओडिसा रो फोक थिएटर ट्राइबल लिटरेचर हैंडलूम एंड लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशन फील्ड रो IICDEM 2026 जोटा कि शो करची इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 70 प्लस कंट्रीज 10th सेंचुरी रो पट्टचित्र चली आसुची व्यासकवि फकीर मोहन ओडिया भाषा सम्मान 5 लाख कैश अवार्ड मिलिबो फकीर मोहन सेनापति नेम रे एटा रखा जायछि हु वाज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न ओडिया प्रोज ओडिशा परब गुवाहाटी रे एटा ऑर्गेनाइज हेतला जनवरी 30 to February 1 20 एग्जीबिशन एंड 10 टा फूड स्टॉल एतरे लागितला साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे मराइन बायोडायवर्सिटी गोबी फिश
फर्स्ट टाइम इंडियन वाटर से रिकॉर्ड करा जाइछि डिस्कवर करा जाइछि मिनरल एक्सप्लोरेशन आईआईटी भुवनेश्वर से गोटे सैटेलाइट बेस्ड हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी से माने डेवलप करछन फॉर व्हाट फॉर बॉक्साइट मैपिंग ओडिशा होल्ड्स ओवर 50% ऑफ इंडियाज बॉक्साइट रिजर्व्स माने इंडिया रो बॉक्साइट रिजर्व्स रो मोर देन हाफ ऑफ इट पब्लिक हेल्थ रे किछि भी निपा वायरस सस्पेक्ट हेइनी किछि कंफर्म केस बाहरी नी ओडिसा रे सो हाइटेंड सर्वेलेंस मेंटेन्ड फेक ई चालान स्कैम गवर्नमेंट एडवाइजरी से माने क्लारिफाई करछथि कि जो चालान भाया एपीके फाइल आ प्राइवेट पेमेंट लिंक रे आसियो माने जहार लास्ट रे .gov.in नथिबो सेतरे क्लिक न करबाको वेरिफिकेशन ओनली थ्रू द ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स और एप्स ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड लास्ट एटी देखिबे किछि क्वेश्चंस रही छै जीएस पेपर 1 पेपर वाइज 5-5टा क्वेश्चन रही छै जीएस पेपर 2 देन जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एथिक्स पे भी 5टा क्वेश्चन रही छै सब को निजे आकु लेखिकी निजे सेल्फ इवैल्यूएट कर परिबे ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग